allies are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. We are developed. ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी. एक तरह से भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है. जो भी कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट बोल के उन्हें रिहा किया है और उन्हें एक्विट नहीं किया गया है, लेकिन हम इस फैसले को लेकर जो है तो हाईकोर्ट जाने वाले. पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए. मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता. Please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं फिर. Those who peddled the Bhagwa terror, Hindu terror, saffron terror narrative for nearly a decade, today just brush it off when the verdict goes against them to say it is not the issue. Interestingly, for Mr. Rahul Gandhi, there are those who have pulled out his stock portfolio and said that he has made gains upwards of 3 crore rupees in the times when he believes that our economy is dead. So at all points, this entire narrative spinning is coming undone and perhaps proving to be the biggest undoer of the Congress party and its leaders. But viewers, as I say namaste and jai hind to you on this edition of The Right Stand, the simple question is there merit when one of the acquitted turns around and says, "Aaj sirf faisla hua hai, only a verdict or decision has been made. Nyay nahi hua, justice has not been done. That will be served only those who sought to malign Hindutva, sought to malign Bharat's parampara and tradition and its inherent Hinduness, inclusive nature of its Hinduness, by branding it as a terrorist extremist entity. Will they apologize and will they be brought to book? That's the biggest question. 17 years, nearly 17 years after that blast in 2008 in Malegaon that killed 6 people, injured about 100, a special NIA court in Mumbai acquitted all the 7 accused, citing no reliable and cogent evidence against them. Sadhvi Pragya Thakur, Lieutenant Colonel Prasad Purohit, Major Retired Ramesh Upadhyay, Ajay Rahirkar, Samir Kulkarni, Sudhakar Chaturvedi and Sudhakar Chaturvedi were all cleared of charges including criminal conspiracy and murder under the Bharti Nyaya Sanhita and sections of the Anti-Terror Law, Unlawful Activities Prevention Act. The special NIA court observed: 1. No evidence that a bomb was planted on the bike. 2. No proof that Sadhvi Pragya Singh Thakur owned the bike used in the blast. 3. No proof that RDX was stored at Lieutenant Colonel Purohit's residence. Military grade RDX. That's what the opposition has repeatedly tried to say and malign one of Bharat's foremost soldiers. 4. Proof presented has been compromised. It is unreliable. 5. Maharashtra ATS fabricated evidence in the case. 6. Sanction orders under the UAPA Act were flawed. 7. No proof that the accused committed terror activities. 8. No proof of conspiracy to establish a Hindu Rashtra. Now the big questions, just 3, although there are many. Was the term Hindu terror, Bhagwa Atankwad, saffron terror invented during the Congress regime, which was in power at that time, UPA, part of a politically sanctioned blueprint to undermine Hindutva? Will the party apologize for coining the term Hindu terror and saffron terror? Was a well-calculated conspiracy orchestrated to malign Hindus and give Islamists cover fire?
many questions remain. Let's go straight across to our guest this evening. But the larger question and the biggest question, as I say, Namaste and Jai Hind to Sardar R.P. Singh, National Spokesperson of the BJP, Khaliqur Rahman, leader of the Congress Party, Atikur Rahman, Islamic scholar, and Dr. Ratan Shardha, author, also who leans towards the RSS and RSS thinker. My Namaste and Jai Hind. The simple question is, this entire narrative, does it now stand busted? Ratan Shardha ji, let's start with you this evening. And Sardar R.P. Singh wants to say something. Okay. Yes, Sardar R.P. Singh, go ahead. Very small point. Anand, you rightly hit at the head when you said it was a blueprint designed and drafted to malign an ideology for political objectives. Because they feel certain from an ideology, because they thought this can be only ideology which can be a political alternative. So why not to blame, defame, and ensure that this ideology is rooted in the country and people don't vote for that. And this was only because Congress has tasted the blood by painting Sikhs in the same fashion, when they painted all Sikhs as anti-national. So they wanted to paint all Hindu or nationalist ideology followers as anti-national. Ratan Shardha ji, interestingly, it was not Congress Party which first coined this entire Bhagwa Atangwad or saffron terror. It was not a Congress leader where it all started. It started in Maharashtra, but an erstwhile Congress leader, now scion and patron of a very big party which is now in splintered, used this reference first, if my memory serves me right. Ratan ji. Whoever might have invented the term saffron terror, fact is that who actually established it or tried to establish it? It was Congress. And let us look at the entire sequence of events. It began in 1993 when Mr. Venerable Sharad Pawar invented 13 bomb blasts in the serial blast case in Mumbai, saying I had to balance the two. So when you try to balance terror against an innocent society, you are creating the biggest crime. Then it ended in 2013 with the introduction of communal violence bill, which painted Hindus as aggressive majority who is out to destroy the minority. So we had to prove that we were not involved in any terror activity, we were not involved in violence, and I had to prove my innocence if somebody put a finger at me without knowing who put the finger at me. Now the in-between, I would like to tell you something more. 2002 Godhra train burning. So 2004 Congress appoints Lalu Prasad appoints a commission which says Hindus themselves poured oil on themselves and burned themselves. Then you have 2004, you have Ishrat Jahan encounter, Sohrabuddin encounter, which makes Congress central government target Amit Shah, who is in jail for months, who is thrown out of in Gujarat and endlessly persecuted till the things came to court and he got released. Then you had 2007 Samjhauta Express. This is the first busting of saffron terror, if you remember, Swami Asimanand, who was framed despite one case already framed where some other people are involved, including Pakistanis and Muslims. 2008, Malegaon happens, a case is filed where Safdar claims from Simi says, okay, I am the part. America says they are the part. But suddenly Congress turns around, creates a parallel theory. Which government in this world makes two cases, first one case, then turns around, puts another case, two cases running simultaneously. Then 2008, Mumbai, 2611, Digvijay Singh and all the Congress say RSS ki sazish. So this continues. So this, and then Rahul Gandhi goes to USA, says Hindutva terror is much more dangerous than the Muslim terror. So this was a continuous attempt to put Hindus in a corner, put any ideology which puts Bharat first, talks about its own culture, its own knowledge, its own civilization, and tries to present the right picture of this country rather than the British colonial mind that we are defeated people, we have no knowledge, we have no civilization, we were third-rate people whom British actually civilized and created a nation called India on 15th August 1947. So all this put together, there is a continuous narrative. Somehow we could not respond. In fact, I must say, I give credit to the saffron terror theory because that made me an author. I was not an author. I decided to research and respond to these people. And this Digvijay, what he says today is something very different. Then you see, NI 2011, the Malegaon case is with the AST for the SIT for years together.
Mr. Purohit, Colonel Purohit does not get a bail for 9 years and no case is filed. 2011, the case goes to NIA, which has got a success rate of 95%. So to blame today the same NIA for failure of Malegaon case, you forget there is no case. You try to create evidence, you fail to create an evidence. What could NIA do? So finally the case falls flat. So this continuous narrative was cornering Hindus for the only reason they are accommodative, they are inclusive, they take everybody's equal sons and daughters of this land. This is the fear that Congress had, and this has led to this entire opposition to create this terror narrative, which is finally burst today. Now they will create another narrative, Sanatan Dharma ko khatam karo, dengue, malaria, because they know it has not worked. Khalikur Rahman, was this part of a concerted political blueprint that said, okay, if there are Hindu votes consolidating, let's diffuse that by creating a Hindu terror narrative? See, Congress never believed in, the politics of Hindus or Muslim or the polarization. Congress has always believed in the inclusivity, and Congress, in fact, never tried to practice what the BJP, in fact, and the RSS is trying to make the baseless allegations against the Congress. In fact, as you very rightly said, that the word, the Bhagwa, are the saffron terrorist, are the Bhagwa Atankwats, was coined by R.K. Singh, in fact, who later became a minister in the BJP government. No, sir, he didn't. He didn't coin it. Yeah, No, he didn't. yeah. He didn't coin In it, fact, sir. No, he didn't coin it, sir. It emerged from Mr. Sharad Pawar from within the NCP and then within Maharashtra and then Congress party. And but it was also used by Mr. R.K. Singh, and then He was an IS officer. Yeah, I know. He was an IS officer. I know. No, He was a he was UPA. no, he was. IS No, no, officer was reporting to Mr. Shinde and Mr. Chidambaram. No. But see, if the BJP, in fact, had a problem with that, then why did BJP induct him and then made him a minister? So this shows the double standard of the BJP. So BJP, listen to me. So BJP, whenever it is convenient for them, they forget whatever. Okay, Khalikur Rahman. Okay, we can agree to disagree here. Let's say 1 second, Sardar R.P. Singh. I just have one question. If Mr. R.K. Singh said that, did Mr. Chidambaram correct him? Did Mr. Shinde correct him if the Congress did not agree? Did Mr. Digvijay Singh not stand and inaugurate a book in 2012 after Ajmal Amir Kasab had been arrested and the proof was out there that 2611 was Bhagwa Atankwad, RSS Sajish, a book written, and he stood there. Did he not use the word saffron terror? Did Rahul Gandhi not use Bhagwa Atankwad? Did they not use it? So did they correct R.K. Singh? If it was R.K. Singh who started it, did they penalize him? Did they say he is wrong? And tell me, Sir Khalikur Rahman, name a single Congress leader till date who said Muslim terror or Muslim terrorism. See, let me tell you that Islamic Atankwad has any Congress leader said. No, let me tell you. So why did they use the word Bhagwa Atankwad if they are secular and they never see religion in terrorism? Mr. Anand, let me tell you, as far the terror is concerned, terror has got no religion. Then if that is the case, sir, then why did the Congress leaders use saffron terror, but they never used Muslim terror? Why did they never use, they didn't even use green terror. They never used those words, and correctly so perhaps. But then why did they say saffron terror? No. So that's what I'm telling, because the terror has no color, terror has no religion. If that is the case, sir, you please tell me what. Going across straight now, please request our panelists to wait. I'm going across to the former Chief Minister of Madhya Pradesh, who's joining us now. Uma Bharti ji, namaste, Jai Hind. मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ. उमा दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आनंद जी. आज आप क्या कहेंगी? जो कोर्ट से निर्णय आया है. आज जी आज मेरे लिए खुशी का विषय इसलिए है क्योंकि ये हमें पता था कि जहाँ जिसको राम जन्मभूमि कहते वहाँ राम जन्मे थे, लेकिन जब उस पर कोर्ट की सील लगी थी तो हमारी अंतरात्मा तृप्त हुई थी. इसी तरह से हमें तो शुरू से पता था कि प्रज्ञा हों, कर्नल पुरोहित हों, उनके साथी और सहयोगी हैं, वो सब बेगुनाह हैं और उनको बुरी तरह से इसमें फंसाया गया. उनका कोई लेना देना नहीं इस मामले से. लेकिन आज जब कोर्ट की सील लगी उसके ऊपर
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे को कितना संतोष हुआ कि माननीय न्यायालय ने हमारे आत्मसम्मान की रक्षा की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि धर्म का कोई रंग नहीं होता, आतंक का कोई रंग नहीं होता। पर उमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर धर्म का रंग नहीं होता तो कांग्रेस वालों ने भगवा आतंकवाद क्यों कहा, सैफरन टेरर क्यों कहा? इसलिए क्योंकि उनकी दिक्कत है कि उनके पूरे शिक्षक वामपंथी हैं, वो वामपंथियों से शिक्षा लेके आगे बढ़ते हैं और वामपंथियों को भारत के सैफरन से, भगवा से, केसरिया से नफरत है, क्योंकि वो लोग लाल रंग का जो उनका झंडा रहा उससे उनको लगाव रहा है। उनको सैफरन पसंद नहीं है, उनको भारतीय संस्कृति पसंद नहीं, उनको हिंदुत्व पसंद नहीं, वो हिंदुओं को नीची नज़र से देखते हैं। और दुर्भाग्य से उनको बुद्धि प्रदान करने वाले लोग अब वही लोग हैं। ये स्वतंत्र चेतना के लोग कांग्रेस में लगभग खत्म हो गए हैं और उसी का परिणाम है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। अन्यथा भगवा शब्द जो है वो केसरिया है ना, भगवा केसरिया का मतलब है सूर्योदय का कलर। तो सूर्य तो अंधेरे के आतंक को समाप्त करता है। केसरिया शौर्य का रंग है, आतंक का नहीं, शौर्य का। शौर्य हम दिखा सकते हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए हम किसी के प्राण ले सकते हैं, प्राण दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को आतंकित करने के लिए अपने शौर्य का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए बिना सोचे समझे, ना समझी में प्लानिंग के साथ हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, पूरी दुनिया में ये स्थापित करने के लिए कि बहुसंख्यक समाज आतंकवाद का समर्थक हो गया है और इसलिए अल्पसंख्यक समाज संकट में है और इसलिए वो सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देने लग जाएं। उन्हें ये नहीं सोचा कि वो जो बोलते हैं उससे दुनिया में भारत की छवि कितनी खराब होती है। ये बात वो भूल गए कि उन्होंने इससे भारत को बदनाम किया है, हमें बदनाम नहीं किया है। दीदी, एक और प्रश्न। आज आप मेरे मित्र मनोज से बात कर रहे थे तो आप भावुक हो गई थी, क्यों इतना भावुक हो गई थी आप? तो क्यों नहीं होंगी, आपको क्या बताऊंगी। जब मैं नासिक की जेल में प्रज्ञा को मिली थी और मुझे प्रज्ञा ने नहीं बुलाया था, आपको मैं बताऊं ये पूरा किस्सा। मुझे तो महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रज्ञा पर पुलिस की कस्टडी में कितने अत्याचार हुए हैं, तो अब वो फिजिकल टॉर्चर कितना हुआ है और वो किस तरह से अशक्त हो गई है, असहाय हो गई है, उसके अंग अंग टूट चुके हैं। तो मैंने किसी तरीके से जेल की अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी कि मैं भी एक संत हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। उनको ध्यान नहीं रहा कि उमा भारती हूँ मैं, मतलब नाम तो उन्होंने पढ़ा, ध्यान नहीं गया। जब मैं नासिक में पहुँची तो जब भीड़ सड़क पे आ गई मुझे रिसीव करने, तब उन्होंने मेरा नाम काट दिया, नहीं आप नहीं मिल सकते। मैं तुरंत कोर्ट में गई तो पूरा कोर्ट का कैंपस वकीलों से भर गया, मेरे फेवर में वकील खड़े हो गए। जज ने लंच ब्रेक रोक के तुरंत मेरी सुनवाई कर दी और कहा कि नहीं, इनको मिलाना पड़ेगा। अब जब मैं प्रज्ञा के पास पहुंची तो मैं तो ये सोच के पहुंची थी कि जो मुझे व्यक्ति मिलेगा वो अपने अंग भंग टूट जाने से, शरीर के हर अंग पे कष्ट था, सिर पे, हाथ में, पाँव में रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत दुखित प्राणी मिलेगा। मैं कुछ ले ही नहीं गई, जेल के मैनुअल का संकोच हो रहा था और वहाँ वो मेरे लिए माला, शाल और श्रीफल लेके खड़ी थी और सूर्य की तरह उनका चेहरा चमक रहा था। और जब मैं उनको देखी तो मैं तो एकदम रो पड़ी उनको देख करके, इतना रोई कि वो मुझे समझाती रही और वो मुझे कहने लगी, कह दो बाहर जाकर के हिंदुस्तान के लोगों को कि मैं हिंदुत्व को लज्जित नहीं होने दूंगी। मुझे कहा गया कि मैं ये नाम ले दूं कुछ बीजेपी के, कुछ अन्य संगठनों के, कि इनके कहने पर भगवा आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस तरह से बहुसंख्यक समाज बदनाम हो जाए, भारत बदनाम हो जाए। लेकिन मैं दीवार में जिंदा चिनवा दी जाऊंगी गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की तरह, लेकिन मैं ये नाम नहीं लूंगी, ना मैंने लिए हैं और ना मैं लेने वाली हूँ, ये कह दीजिए। उससे मैं इतना रोई उसको देख करके कि उसको, मेरे को समझाना पड़ा कि दुखी मत होइए। उसके चेहरे पे एक गौरव का आत्मसंतोष था जो उन साहबजादों के चेहरे पे था जब उनको दीवार में चिनवाया जा रहा था। वैसा ही तेज मैंने उसके चेहरे पर देखा था। तेरा भाणा मीठा लागे, जब गर्म तवे पर जलाए गए थे गुरुदेव तो उन्होंने कहा था तेरा भाणा मीठा लागे, ऐसा ही प्रज्ञा का चेहरा था। और यहाँ भी मैं प्रज्ञा को जेल में मिलती थी जब वो भोपाल की जेल में थी। जब वो सांसद बनी तो मैंने लोगों से कहा कि अरे तुम एक वोट दे करके अपने वोट को धन्य कर रहे हो, क्योंकि ये महिला साधारण नहीं है। इसलिए मैं माननीय न्यायालय का बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका बहुत सम्मान व्यक्त करती हूँ और मैं इस चीज़ के लिए क्या बधाई दूँ। मैं तो फिर रो पड़ी खुशी से। हमें तो पता था वो बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, लेकिन आज घोषित हुई वो बेगुनाह और बेकसूर, इसकी खुशी हुई है तो उसमें भी रो पड़ी मैं। जिन्होंने भगवा आतंकवाद दिया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बहुत कुछ कहा, अनाप शनाप कहा भी, और कहा जाता है कि उनके निर्देश पर जो भी उनको प्रताड़ना दी गई वो दी गई, वो भी मध्य प्रदेश से ही हैं राजा साहब। हाँ, हमारे लिए दुखद है ये, क्योंकि उनके पिताजी भी भगवा पगड़ी पहनते रहे होंगे,
राजा हैं वो, बड़े भाई मेरे, दिग्विजय सिंह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इस मामले में नहीं सम्मान कर पाऊंगी कि उनने अपने पिता, अपने दादा की जो भगवा पगड़ी थी उस पर कालिक पोत दी, भगवा आतंकवाद कह करके। उनने खुद ही अपने पूर्वजों की, जिसको पाक कहते हैं हमारे यहाँ पे, यानी पगड़ी, उस पर कालिक पोत दी, और उन्हें इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। एक बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं, अब की बार तो नर्मदा जी में छलांग लगा के स्नान करके हाथ जोड़ के साध्वी प्रज्ञा से, कर्नल पुरोहित से, एक आर्मी के ऑफिसर को जिस तरह से टॉर्चर किया गया साहब, आप पता तो लगाइए क्या क्या नहीं उसके साथ में हुआ है, कर्नल पुरोहित के साथ में। मेरा हृदय फटता है, मैं मिल नहीं पाई हूँ उनको, लेकिन हृदय फटता है जो मैंने सुना है, जो कुछ उनके साथ घटा था। इसलिए जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और माननीय न्यायालय ने आज हम सबको सांत्वना प्रदान की। आपको लगता है एक और जो आज एक्विट हुए हैं सुधाकर जी, उनका ये कहना है कि न्याय हुआ है, फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ। न्याय तब होगा कि जिन्होंने ये काम किया, ये साजिश रची, ये प्रताड़ना दी, वो जब तक माफी नहीं मांगते, उन्हें सजा नहीं मिलती, तब तक न्याय नहीं होगा। आप क्या कहेंगी दीदी? जो न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत अभी केस चल रहा था उसमें तो इनको इतना ही करना था, लेकिन हाँ ये हमेशा होता है, आजकल ये शायद मेरे ख्याल से कानून में भी ये प्रोविज़न है कि अगर झूठा कोई केस बनाया गया झूठे आधारों पर, और उनने जो बाहर बयानबाजी की है उन झूठे आधारों पर, उनको भी दंडित करने का प्रोविज़न है। अब इस मामले में जिन लोगों को विचार करना उनको करना चाहिए, मैं तो कहूँगी कि होना चाहिए इस पर विचार। और वो जो मालेगांव ब्लास्ट में लोग मारे गए उनको साथ तो न्याय हो ही नहीं पाया, क्योंकि असली अपराधी तो बच निकले। वो तो किसी ने ब्लास्ट करवाया है इन लोगों को फंसाने के लिए, वो तो बच ही निकले हैं। ये तो बेकसूर लोग थे, और जो मर गए वो बेकसूर थे, उनके परिजन जो भूखों मर रहे होंगे वो बेकसूर थे। और किसी ने अपनी राजनीति को रचाने के लिए, राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को इस्टेब्लिश करने के लिए पूरा काम किया। ये कौन लोग थे? राहुल गांधी थे, पी चिदम्बरम थे, दिग्विजय सिंह जी थे, यही लोग तो थे। अब क्या करना चाहिए? क्या अब इस, अगर कोई भी इसका रेफरेंस देता है भगवा आतंकवाद का, या भगवा को आतंकवाद से जोड़ता है, आतंक से जोड़ता है, क्या उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? ये पूरा नैरेटिव अब आपको लगता है कि समाप्त हो गया? क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं जो इसको अब भगवा वेपनाइजेशन, हिंदू एक्सट्रीमिज्म कहते हैं दीदी। पृथ्वीराज चौहान जी को तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव के नाम से तकलीफ थी। समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने देवी देवताओं के नाम पर तकलीफ हमें क्यों होती है, हमें अपने भारत के आस्था के मान बिंदुओं के नाम पे तकलीफ क्यों होती है, हमें महापुरुषों के नाम पे तकलीफ क्यों होती है। कैसे लोग हैं जो अपने ही धर्म को लेकर के हीन भावना से ग्रस्त हैं, ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त लोग हैं। अंग्रेजों और मुगलों ने इनकी रीढ़ की हड्डी कुचल दी है, इसलिए ऐसे लोग हो गए हैं। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी है साहब। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहा है, और इसलिए आज हम गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। उमा भारती जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू। Let's go back to our guests. They were all hearing Ms. Uma Bharti. She was in transit and we were able to connect with her. Going back to our panelists, and thank you for your patience to all the gentlemen. You heard Uma Bharti there, Atikur Rahman. You haven't made your point, so please, let's take this forward. Anand, Uma Bharti ji is a very senior fellow, and I decline to comment what she said, but there are so many other areas wherein I do not agree with her. Anyways, I would like to confront Mr. Ratan Sharda ji. By your logic, Mr. Ratan Sharda ji, you said that the Congress was in power and they, had this saffron terror and this and that. And by your simple logic, if I agree with you, you are, since 15 years, you are in power. So by your simple logic, I will say that you manipulated the entire case. You threatened the witnesses. In the absence, Anand, of the witness protection law in India, Anand, please tell him the dates of the witnesses, please. Let him make his point and then you respond. Completely, the 70 witnesses who turned hostile, they were threatened, they were intimidated, and that is why this case never saw the justice in it. By a simple logic. Thirdly, a very important point, Anand, is, as Uma Bharti ji also pointed out, that we are just, rounding our arguments towards saffron terror and Muslim terror and Islamists and all.
if in the train blast case also, and in this particular case also, if these are the people who have been exonerated by the courts, who will be blamed? Is this a closure? The investigating agencies, the governments of the time, the police, the ATS, NIA, we are paying the taxes and they are getting the salaries. Is there any accountability? And the people who have done these dastardly acts, they must be next to me in the train. Right. Atikur Rahman ji, please, I have to interrupt again. Going straight across to Sudhakar Chaturvedi, one of the people who's been acquitted today. Sudhakar Chaturvedi ji, नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है नमस्कार। आज आपने जैसे ही कोर्ट से फैसला आया, आपने कहा कि आज फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा है कि हमारे जो घर का मामला है नासिक में जी, एनआईए के पेज नंबर 40 पैरा नंबर 3 में एनआईए ने जो चार्जशीट आरोप दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 21 जनवरी 11 मतलब सुधाकर चतुर्वेदी घर में एटीएस ने बम प्लांट किया, ऐसा एनआईए का आरोप पत्र में है। और एपीआई बगाड़े उसमें एटीएस के चीफ थे नासिक के, उनका नाम है कर्नल मेजर खांजेवड़े और सूबेदार पवार, 2 विटनेस हैं। 164 बयान है हमारे कोर्ट में। उस चीज को आज कोर्ट ने साबित कर दिया। अपने जजमेंट में कोर्ट लिखा है कि चतुर्वेदी की जो घर का मामला है वो साजिश है, उसमें एनआईए की बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो साजिश किसने किया? वो आदमी घूम रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई बयान नहीं है। ये कौन सा न्याय है? आज कौन सा न्याय मिला हमें? अभी न्याय तो बाकी है, ये तो फैसला हुआ है। इस बात हमने किया है। न्याय तब होगा जब गिरफ्तारी होगी, जांच होगी, किसने साजिश किया है। आपने भी 2-3 साल पहले साधुत्व ग्रहण किया, आपको भी काफी कुछ झेलना पड़ा, आपके परिवार को भी तकलीफें झेलनी पड़ी, जरा बताएंगे। हाँ, अभी 9 साल 11 महीना जेल में था। परिवार कोई व्यक्ति जेल तक आया नहीं मिलने के लिए, और 4 महीना मेरे पास कोई वकील नहीं था। संजीव पुनालेकर एक वकील थे मुंबई में, हमसे मिलने आए, कलमनामा लिया। आज तो वही हमारी केस देख रहे हैं। हमारे पिताजी रोते रोते मर गए, मुलाकात नहीं हुई, पूरा परिवार बिखर गया। एक बच्चा है, विकलांग है, 22 साल उम्र है, जन्म से विकलांग है, बोलता नहीं है, हाथ पैर काम नहीं करता है। आज तक दवा नहीं करा पाया मैं। ना हमके सरकार पता, ना समाज पता, ना संगठन पता है। ये जो वेदना है हमारे, जो 17 साल गया है, तो 17 साल कौन वापस करेगा? ये कौन सा न्याय है? हमारा जो 17 साल गया है, ये कौन वापस करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? अगर हमें न्याय मिला है तो न्याय के पीछे क्या मिला है? जाओ घर जाओ। अभी हमको कल कोई उठा के फिर बंद कर, 2 साल बाद फिर कोई बंद कर देगा। ये कब तक चलेगा देश में? इसलिए बोला कि ये न्याय नहीं है, फैसला हुआ है। न्याय तो बाकी है। न्याय तब होगा जो इस केस के पीछे है, जो साजिश किया है, वो जब सामने आएगा तो न्याय माना जाएगा। ये कौन है आपके हिसाब से जिन्होंने साजिश किया है, और क्यों किया है साजिश, और आपको क्यों इसमें लाया गया? देखिए, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ जी, पहले भी था, आज भी हूँ। तो उस समय जो सरकारें थी, कांग्रेस सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, तो हिंदुओं को डैमेज करना, हिंदूवाद को खत्म करना है और संघ पे बैन करना है। ये पूरे फ्रेम से पता चलता है कि आरएसएस को घेरने की साजिश थी। क्योंकि हमारे लॉकअप में टॉर्चर के दौरान में योगी जी का नाम लेने के लिए बहुत बड़ा प्रेशर किया। 11-12 दिन हमारा टॉर्चर किया हमें। योगी जी का नाम लेने के लिए आप पर प्रेशर था? हाँ, प्रेशर था। मैंने 2017 में जब बाहर आए तो मैंने कई इंटरव्यू दिए हैं, हमारे आज भी इंटरव्यू हैं। मैं कई बार बोला है कि योगी जी का और माननीय मोहन जी का नाम लेने के लिए प्रेशर किया गया था। हमारे पैर में आधी चोट है, हमारे दाहिने हाथ से नाखून निकला हुआ है, खींचा गया है नाखून, लेकिन हमने नाम नहीं लिया। हमारा कोई संबंध था नहीं उस समय, नाम सवाल नहीं होता है जी। तो जो टॉर्चर हुआ, किसके पीछे? हमारी कोई दुश्मनी थी नहीं एटीएस से, कोई नेता भी हमारा दुश्मन नहीं था जी। तो हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों? तो समझ में आता है कि हमको माध्यम बना करके
कहीं कहीं संघ को घेरने की साजिश थी। संघ को घेरने की साजिश थी, लेकिन योगी जी का संघ से तो कोई लेना देना नहीं, वो तो संघ से है। संघ नहीं है, योगी जी एक हिंदुवादी नेता हैं, वो संत भी हैं। उनको एक भगवाधारी व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि भगवा को बदनाम करना है, इसलिए भगवा आतंकवाद गढ़ा गया इसका। जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी थी इसीलिए थी, जब तक भगवा आदमी आता नहीं है तब तक थ्योरी कैसे चलेगी। तो हमें लगता है कि भगवा की आज विजय हुई है, भगवा की जीत हुई है, और बाकी आगे परमात्मा जाने आगे क्या बुल खेलेगा, क्या होगा इस केस में। अभी बहुत लड़ाई बाकी है, अभी तो विपक्षी भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, अभी लड़ाई बाकी है, क्योंकि हमारी 2013 में पिटीशन है मुंबई हाई कोर्ट में जी, जो हमारे घर का फैसला आया है कि ये संशय है, साजिश है, वो हम 2013 में मुंबई हाई कोर्ट को लिख के दिया है जी, इसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक वो पेंडिंग है, और उसको हम आगे तक लेके जाएंगे। तो अब आप ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, आप इस लड़ाई को पूरा लड़के रहेंगे? बिल्कुल नहीं, छोड़ना नहीं है। बहुत वेदना, काफ़ी प्रताड़ना आपने झेली है। जब आप ये 17 साल देखते हैं और आज इस फैसले को देखते हैं, तो कभी कुछ कोपित होते हैं कि लोग, समाज ने आगे बढ़कर आपकी मदद नहीं की, अकेले आपको लड़ना पड़ रहा है? देखिए, समाज ऐसे ही है, क्योंकि हम वीर सावरकर जी को फॉलो करते हैं, तो हमारी वेदना, हमारी तकलीफें हैं 17-18 साल की, जेल में बाहर भी। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि सावरकर जी के ऊपर जो समय था उनका, जो तकलीफें हुई जी, उन्होंने जो ट्रबल किया था उस समय, यही समाज था, यही मानसिकता थी। लोग नहीं आते हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे धर्म संभाजी महाराज हों, चरणप्रताप महाराज हों, सबके साथ यही हुआ है। अकेले ही लड़ेंगे, और लड़ने वाले लड़ते हैं, देखने वाले देखे रहते हैं। इसलिए समाज के ऊपर ज्यादा हमको बात नहीं करना है। समाज वही है हमारा जी, आज भी आगे भी वही रहेगा, लेकिन समाज में कुछ लोग ही लड़ते हैं जी। अगर हमें बम ब्लास्ट करके अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो देरी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा रास्ता नहीं है। तो ये गलत जगह हाथ डाल दिया उन्होंने, गलत व्यक्ति से, गलत संगठन से, गलत विचार से पंगा लिया कांग्रेस ने। हमारा ऐसा काम नहीं है। अगर हमको तोड़ना होगा तो हमको रास्ता खुला है, हम तुमको कभी भी तोड़ सकते हैं, खुलेआम तोड़ सकते हैं, ताकत है हमारे पास, लेकिन हमारा रास्ता नहीं है, हमारा चिंतन नहीं है। तो सनातन है, सनातन सबको लेके चलता है जी। सनातन धर्म की जय हो, सिर्फ सनातन नहीं बोला जाता है जी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सिर्फ सनातन ही बोलता है जी। उसमें मुसलमान का नाश हो ऐसा नहीं बोलते हम जी। अधर्म का नाश हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, अधर्म है तो उसका नाश हो जाए जी। ऐसी हमारी संकल्पना है। उस सनातन को लेकर हम जीते हैं, उसको लेकर चलते हैं जी। ऐसे भगवा को घेरने की साजिश थी। हम तो एक बलि पकड़ा है, हम तो माध्यम बनाए गए थे, हमारा उसमें कोई रूल तो था नहीं। हमें सीधे साधे कार्यकर्ता थे, संघ काम करते थे, संघ के प्रचारक थे, घर परिवार छोड़ करके हम समाज के लिए छोटे मोटे काम करते थे। तो अभी आज थ्योरी जो वो साफ हो गई, इसमें किसकी साजिश थी, क्या करना चाह रहे थे, वो सब फेल हो गए। रही बात इसके पीछे कौन है, वहां तक पहुंचना जरूरी है जी। हमारा सरकारों से भी आग्रह है, और जो एजेंसियों में जो ईमानदार ऑफिसर बैठे हैं हमारा उनसे भी आग्रह है कि इस पे ध्यान दें, नहीं तो ऐसे ही लोग फंसते रहेंगे और मरते रहेंगे। जी। सुधाकर जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। जी धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद। We're going straight across to now to Professor Salvatore Babones, American sociologist, who's joining us. His new book on Dharma, Democracy is out, and we'll talk to him about the Malegaon blast and also Trump's tariffs. Salvatore Babones, Professor, thank you very much for speaking with us. You've run into some rough weather with your new book internationally. Tell us about it. Sure. The book was released in May, but I've had a lot of trouble, first of all, getting published in the first place because Western publishers received emails from members of the South Asian Studies community in the United States and abroad, trying to warn them away from the book. I've had protesters at events I've held. I've been added to Islamophobia watch lists. It's been crazy, all of the attempts to block publication of this book and prevent people hearing its message, which is really simply a message of data. All I'm trying to do is get the facts out about Indian democracy, and that seems to scare a lot of people.
Professor Babanis, I'll come back to you in a bit. I just also quickly want to thank our other guests who joined us on the panel, but we weren't able to engage them in a longer conversation because of we were able to get through to Uma Bharti and Sudhakar ji. So I thank our other guests for joining us this evening, and we'll make it up to them for a longer conversation on this very soon, hopefully on our Friday edition. So, but we continue the conversation with Professor Babanis. What is this book about, Professor Babanis? The book's called Dharma Democracy because the fundamental finding of the book is that Indian democracy succeeded where other countries' democracies failed, precisely because of the strength of Hindu civil society. Western political scientists have long argued that you have to have a strong civil society to support a democracy. All countries start out as democracies. I mean, virtually all the new countries of the post-colonial era started out as democracies. Most of them, like Pakistan, failed almost immediately. India survived. And the book lays out the case that it survived because of the strength of Hindu civil society, which Western political scientists did not see because they weren't looking for civil society in anything religious. And in fact, India is suffused with religion. All kinds of civil society in India are religiously informed. Not just informed, it's also inclusive. That's the inherent Hinduness or Hindutva. But Professor Babanis, do you agree that Hindutva is extremist, this entire Hindu terror narrative? No, I mean, clearly there's not a, although we might call India a Dharma democracy, and although the strength of Hindu society is the basis for Indian democracy, India is not a democracy because of any particular tenet of Hindu faith. The reason India has survived as a democracy is that Hindus have worked together across the country to unite the country in a single nation, to create a civil society that spans all of India, instead of having a Tamil civil society, a Bengali civil society, a Marathi civil society that are separate and disjoint. If that had happened, and again, I can just point people to Pakistan, where there was a Punjabi civil society and a Bengali civil society, and immediately Pakistan split apart. Not politically, West Pakistan maintained military control over East Pakistan until India intervened. Right. But practically speaking, there was never a united nation in Pakistan. This has nothing to do with the particular tenets of particular Hindus. This has to do with the broad acceptance of everybody as being part of the nation, broadly construed. So if acceptance is the heart of Bharat as a nation, and that is Hindutva, then I'm sure, Professor Babanis, you would have seen the Malegaon 2008 case that's gone on for about 17 years, and now the acquittals have happened. In your research, have you ever found any narrative about or evidence of violent Hindu extremism? What would you like to say for those who peddled this whole narrative of Hindu terror and saffron terror? I can't second guess an Indian court judgment, and my book's not about that. I mean, whether this case has been correctly decided or incorrectly decided is beside the point from the standpoint of evaluating Indian democracy. Even in the best democracies, there are court cases that are decided correctly and court cases that are decided incorrectly. That happens everywhere. So whether this case was correct or not is not the issue. The issue is that there's no such thing as a militant Hindu war on India. There's no militant Hindu insurgency in India. Any incidents that have happened that may have been informed by militant Hinduism are rare, are isolated, are not part of how the country is governed. We can't look at particular cases. If we did, we would say that New Zealand is the most Islamophobic country in the world because, of course, the most recent mass killing of Muslims was the slaughter of 50 Muslims at worship in New Zealand, in Christchurch. Of course, that incident does not prove that New Zealand is an Islamophobic country, any more that anything about this particular court case proves anything about the character of India. But Professor Babanis, internationally there is a narrative from one section that pushes this narrative that under Prime Minister Narendra Modi's leadership, Bharat is becoming a Hindutva extremist force, violent Hindu nationalism, and there have been similar utterances made by voices within the opposition domestically. Your thoughts there?
Did you find any relevance to this entire narrative? The RSS is a legitimate civil society organization that has peacefully sought to unite Hindu civil society in India for the last 99 going on 100 years. Now, people who disagree with that goal might very well disagree with Muslim civil society organizations or Buddhist civil society organizations. I mean, that in itself is in no way a problem. Now, Narendra Modi clearly governs as the prime minister of a secular state. He governs from a Hindu point of view, the same way an American president almost always governs from a Christian point of view. I would say that the overt Hinduness of the Indian government under the BJP is rather less than the overt Christianity of American governments under any president. Now, there are examples where Narendra Modi does particularly appeal specifically to Hindus. He also does outreach to other religious communities in India, and that merely reflects the fact that religion is far more important as a motivating force in India than it is in almost any other country in the free world. Professor Babanis, let's just shift tack and allow me to ask you something beyond the book and beyond Hindu and Hindutva and Dharma and democracy. Since you are an American citizen plying your wares in Australia and also very closely watching Bharat, your thoughts on President Trump and his tariffs? Look, Donald Trump is using tariffs as a strategic tool. Whether he succeeds or not is open to question. Whether that's appropriate or not is open to question. He has limited power to do so. Courts have already weighed in on just how limited his power is to play with tariffs and use them as a tool of trade negotiation. I'm not sure it's the best form of diplomacy, but then again, I'm not the president of the United States. But you think it's going to have an adverse effect on Bharatiya markets? Does Bharat have options? Can we as a nation look beyond? Or should we, cow down to this bullying? It certainly won't impact the Indian economy. The Indian economy is growing at 6-7% per year in real terms because of the inherent strength of the Indian economy. You can think of it by comparing the economy of India to the economy of the African continent. The African continent has almost the same GDP per capita as India. Well, how many IITs are there in Africa? Is there a national civil aviation network in Africa? Is there a national road network? Is there a national rail network in Africa? Does Africa have a unified payment system, a unified GST? India is so much better governed than Africa, yet has a GDP per capita roughly equivalent, which means that we would expect India to grow rapidly until it reaches the quality of its governance. And that growth is baked in no matter what any US president does, no matter what happens with tariffs. You might take off a decimal place here or there, we'll never know, but India is going to grow well into the 2030s. Well, so contrary to Donald Trump and Rahul Gandhi, you don't think Bharat is a dead economy? No, there's no sense. If I could determine where my superannuation funds, my retirement savings were invested, I would invest them all in India. Well, thanks. Thank you for that vote of confidence for our country, for Bharat. Thank you very much. आज मालेगांव केस, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। एकनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। मैं जानना चाहता हूं आज कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। देर से सही न्याय उनको मिला है और कोर्ट ने भी कहा है सिर्फ संशय के आधार पर कोई भी आरोपी नहीं बन सकता है, इसलिए उनको निर्दोष किया हुआ है। मुझे याद है जब ये सरकार थी महाराष्ट्र में, मुंबई में और देश भर में कई बम ब्लास्ट हो रहे थे, तब तत्कालीन सरकार ने कहा था कि आतंकवाद या दहशतवाद का कोई रंग नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मालेगांव ब्लास्ट हुआ था तब उन्होंने कहा था ये भगवा आतंकवाद है, ये भगवा दहशतवाद है। तो भगवा दहशतवाद बोलने वाले के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा कोर्ट ने आज मार दिया है और सच साबित हुआ है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। इतना ही मैं कहूँगा।
एक सच्चाई की जीत है और लोगों को राहत मिली है। धन्यवाद जी। एकनाथ जी, बस एक प्रश्न और था कि जिन लोगों ने ये साजिश रचने की कोशिश की उनके साथ क्या करना चाहिए एकनाथ जी, अगर ये पॉलिटिकल साजिश थी जैसा आप कह रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको जिनका कोई इससे संबंध नहीं है उनको जब आरोपी बनाया जाता है तो ऐसे हाल होते हैं, और जिन्होंने किया है उन्होंने माफी भी मांगनी चाहिए, और जो उन्होंने इतने सालों तक इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है, झूठे आरोप में इनको अंदर डालने का काम किया है, जेल भिजवाया था, इनको सबक सिखानी चाहिए। धन्यवाद। ये आरोप ये हमेशा से आप कहते आए कि बहुत प्रताड़ित किया और इतना टॉर्चर किया कि वो चल नहीं पाती हैं अब, क्या ये बात सत्य है? और आज जब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है तो आप क्या कहेंगी? मैं भगवान को और न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सदा से आस्था रही है ईश्वर में और न्याय व्यवस्था में। आज सच का साथ दिया है न्याय व्यवस्था ने, इसलिए मैं पूरी न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने पूरे परिवार की ओर से। दूसरी बात यह है कि टॉर्चर का विषय जो है, तो टॉर्चर तो आप लोग मीडिया से हैं, आपने कई बार देखा उनको कि एक व्यक्ति फिजिकली ट्रेंड जिसको लेके जाते हैं चला के और उधर से भेजते हैं ट्रॉला में पुलिस के, मतलब जो एक सेकंड के लिए भी जिस व्यक्ति ने बिल्कुल भी अपने शरीर को कभी भी बिस्तर पर लिटाया ना हो, कभी आराम करने की ना सोची हो, और ऐसे व्यक्ति को सालों तक बिस्तर से हिल ना पाने की स्थिति में ला दिया जाए, तो इसको टॉर्चर की जगह मेरे ख्याल से और कुछ कहा नहीं जा सकता है। अंशुमन जी, अगर कोई किसी को एक थप्पड़ मार देता है तो 5-7 दिन तक उसके कान में झंझनाहट होती रहती है, पर इधर तो ऐसा था कि 10-10 लोग, 8-8 लोग, 7-7 लोग, मतलब जिसका जितना मन करे उतनी देर तक पीटो, और हर तरह का टॉर्चर। एक महिला होने की भी नहीं सोची गई, उनके शरीर के प्रत्येक अंग को डैमेज कर दिया गया है, रीढ़ भी तोड़ दी गई है, जिसके कारण उनको कई बार व्हील चेयर पर रहना पड़ता है, और वो सालों तक व्हील चेयर पर रहीं। बड़ी मुश्किल से नेचुरोपैथी और उसके सहारे से थोड़ा सा चलना शुरू किया है, अन्यथा आज भी उनको पकड़ के चलाना पड़ता है, सहारे की आवश्यकता लगती है। ये टॉर्चर का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि किसी व्यक्ति को आप चलने लायक भी ना छोड़ो तो इससे टॉर्चर नहीं और क्या कहेंगे? आपकी दृष्टि में क्या हो सकता है, बताइए। आपने भी काफी कुछ झेला होगा, क्योंकि सबने, हमारे पूरे परिवार ने। मेरे पिता इसी शोक में चले गए, मेरी माँ इंतजार करके चली गई कि कभी हमें न्याय मिलेगा, है ना। तो आप सभी न्याय व्यवस्था को भी धन्यवाद दें और सब सनातनियों को धन्यवाद दें, बधाई दें। उपमा जी, मेरा एक और प्रश्न है कि वो लोकसभा में चुन के आई, जनता ने उन्हें भारी मत से चुना, बावजूद इसके उन्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, कहा सुनी, काफ़ी कुछ लोग कहते थे, गालियां देते थे, अपशब्द कहते थे। आज उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? उनके मुंह पर ईश्वर ने तमाचा मारा है, सत्य की विजय हुई है और झूठे लोगों का मुंह काला हुआ है। सत्य की जीत हुई है, तो सत्य सदा से जीतता रहा है, देर से ही सही पर सत्य की विजय हुई है और हमेशा होती रहेगी। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, बुरे विचार के लोगों को भी, उनका भी ब्रेन वॉश करें ठाकुर जी, और उनको भी सद्बुद्धि दें। वो राष्ट्र के विषय में सोचें, धर्म के विषय में सोचें और सच का साथ दें। RVS Maniji, namaste. I also want to understand from you the Malegaon 2008 case. One of the observations made by the court is that the money that went into Abhinav Bharat, there is no proof that it came from the accused. Very important point they have observed, because the point is, I have already been saying, Abhinav Bharat was revived in 2005 when they 1953 it had been closed down, shut down. Revived in 2005. It would have been done with a charities commissioner and a registrar of society, some officer in the state government, which was held by NCP. Thereafter, money has been pumped in. Where from? And the money is not that NGO in the normal course could get it. Lot of money had come. It could not have come from, except you have a great funder, and Hindus
ecosystem do not have such great funders. Number three, where was the money coming from? There were inputs like that, it was all hushed up, because if money is flowing into that, there will be some source. Who was that source? These are all questions which the then Honorable Minister was in the know, his office was in the know, and he should be able to answer that. Or because otherwise the entire funding of this Abhinav Bharat has always been very suspicious, because these people, whether they were members of the Abhinav Bharat, but the question is, why did the Abhinav Bharat take a rebirth in 2000? Because the 2005 itself, the Hindu terror had been put on a blueprint. 2006, the operation started 1st June when the RSS headquarters were attacked by Islamic terrorists. They wanted to counter it. So they came with this thing. Then, sir, after what happened? Samjhauta blast. Samjhauta blast is a classic case of Arif Kasmani shouting from rooftop that I have done it, please pay my money to the ISI. And Indian government says Hindus have done it. So the ISI and Arif Kasmani get into it. Makkah, and ultimately court verdict, it is saying that the accused were all wrongly accused. In Makkah Masjid also same thing happened. Now Malegaon. Malegaon is a clear case of blueprint. The state government or the security agency or whomsoever was, politicians had a blueprint. See what happened? Once Colonel Purohit was arrested, Indian Mujahideen started growing big. That they have a connection. Because 2007, that Javed Ahmed and all that, from the at that time, a lot of things had been flagged. About the coastal Karnataka became a terror hub. Indian Mujahideen is placed in Batkal. Two of the Ahmed brothers were from Mangalore. Yeah. So that area was becoming a terror hub. This was being flagged. I did not receive any direct report from DGMA. I don't get it. We have our own sources through JIC or other MAC or all, from where the report. So I did not know Colonel Purohit was doing this. More importantly, Colonel Purohit was a 34-year-old Lieutenant Colonel, full selection grade. He would have gone on to become a corps commander or a chief of army staff, and one of the finest officers who would have built death knell to the Pakistani forces. His progress was also, there are many dimensions to his progress was also arrested. India lost one of the finest chief of army staff by the entire thing. So they were also targeting that. And ironically, the chief of army staff, Deepak Kapoor, at that time did not go hammer and tongs against the politicians. Co-presented by This is News 18 Network. India's largest news network. Welcome back. Plunging Indo-US relationship in further chaos, the US President Donald Trump has tweeted that he doesn't care what India does with Russia. He's called both economies dead. This comes after he announced 25% tariffs on India, but also maintained that a trade deal could still happen. Trump has also slammed India's BRICS membership, calling the group anti-US and anti-dollar. Yesterday, he had also announced that India will face penalty for buying Russian oil. Meanwhile, the United States imposed sanctions on 6 Indian companies for alleged Iran oil trade violations. In contrast, Donald Trump announced a trade pact with Pakistan, including joint oil exploration, even suggesting that Pakistan might supply oil to India in the future. Reiterating the stance, India has said key sectors like agriculture, gems, footwear and jewelry will be protected. That also includes dairy. Trump tariff war has, of course, echoed in the parliament too, with Rahul Gandhi leading opposition's attack. And Commerce Minister Piyush Goyal is, of course, likely to make a statement in the House around 4 p.m. Listen in to the reactions that have come in.
Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. Pallavi Ghosh has been tracking that story for us. Pallavi, whether Donald Trump wants to blame the BRICS for this decision or India's trade deficit with the United States, the fact is that his decision could very well prove to be a double-edged sword, not just for India, but even American citizens who will be paying a higher cost for all of these commodities. You're absolutely right, Akanksha. I mean, for those who think it's only a one-sided kind of an export which trade is happening, that's absolutely incorrect. If you look at the figures which have been given out by the Commerce Ministry itself, till June 2025, it was standing at 25.2%, making America one of the largest trading partners of India, and likewise India one of the largest trading partners of America. It's not that we are going to be hit massively also. That's what sources keep telling us. We have been working at Plan B and C while we're looking at renegotiations, but American markets are also flooded with many of the Indian products in critical sectors, even some of the agrarian sectors. So at the end of the day, who has to pay the price for it? It could be the American consumers. Giving a quick example was that of eggs. The recent egg prices shot up, and that became a kind of a headache as far as the American government was concerned. So it's the consumers who may have to pay that price, and that is also could be one pressure. But as of now, I think, Akansha, we're going to get some more details on what is it that the government plans to do, what is their response, because at around 4:30, Mr. Piyush Goyal is expected to make that statement in Lok Sabha, and around 5 o'clock in Rajya Sabha. Pallavi, going to request you to please continue staying with us. You know, there have been a series of U-turns, especially when one were to compare Donald Trump's earlier stance during his previous administration. Let me quickly take our viewers through how each sector is going to be impacted and what are those sectors. In fact, to begin with, you're looking at textiles, apparel and footwear that are of course going to bear the brunt of these tariffs. They are going to be very high, and there's going to be a major price disadvantage. Of course, who's going to be bearing the impact of this is going to be the American consumer. You also have chemicals and ceramics as far as these sectors are concerned. It is going to be a high impact because margins are now going to be eroded as well. So these are one of the industries, remember, that are going to bear the immediate brunt of the 25% tariff decision by Donald Trump if this actually continues in the final trade agreement as well. The other sector that's going to be impacted is going to be auto parts. It's of course going to bear a high impact. The margins again will be eroded there. Electronics being another sector where the impact is again going to be very high. Export outlook currently is going to be uncertain. The other very significant sector is going to be gems and jewelry. Moderate to high is going to be the impact over there. Pharma again is going to be another sector. The impact currently expected is going to be low. Why? Because the future status is still uncertain. Because remember, Donald Trump's been very vocal about how he may come up with additional tariffs as far as pharmaceuticals are concerned. Agri and seafood sector again going to bear the low. This is News 18 Network. India's largest news network. Welcome back. Plunging into US relationship in further chaos, the US President Donald Trump has tweeted that he doesn't care what India does with Russia. He's called both economies dead. This comes after he announced 25% tariffs on India, but also maintained that a trade deal could still happen. Trump has also slammed India's BRICS membership. Good evening, you're watching Brass Tacks. I'm Sudhakar Jacob. The Trump tariffs of 25% on India kick in
from tomorrow, the 1st of August. But Trump also seems to be turning the knife in with all kinds of taunts and pokes. He seems to be saying pretty disparaging things about the Indian economy. In fact, in one Truth Social post, even calling the Indian economy a dead economy, comparing it to the Russian economy. Now, it's very clear that there is something more than economic going on here. There is something more than just the tariff negotiations falling through that are going on here. There is something deeply personal that is going on. Certainly with the language that Trump seems to be employing for a country which is a strategic partner, a country that started negotiations early off the blocks, and importantly was considered to be the counterweight or the bulwark to China. The question before India is, should India take Trump's bait, be seen as reacting angrily to him, responding to him in a public fashion, or should there be a more quiet fortitude about how we deal with these tariffs? The markets seem to be showing the way. The markets initially